Welcome to the podcast. Assalamu alaikum. Welcome to the podcast. Today we are going to talk about Pakistan foreign policy, its relation among different countries, and its role in global organization. Foreign policy is a nation's strategy for interacting with other countries to protect its interests, ensuring security, economic and political goals. Key objectives of IR includes national security, economic prosperity, and global stability. Pakistan's foreign policy aims to safeguard national security, promoting economic interests, and maintaining strategic partnerships. Pakistan foreign policy focuses on its relationships with its allies, USA, China, and other Muslim nations, along with addressing regional challenges like Kashmir and Afghanistan. Its priorities include nuclear defense, counter-terrorism. What are the major security challenges Pakistan faces, and how do they affect the foreign policy? इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक एक्सटर्नल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर लायर टेररिज्म 2008 के बाद एक वेव थी, मुशर्रफ के दौर में वेव थी, अब उसके बाद एक ख़तरनाक किस्म की वेव आ गई। सबसे बड़ा टेररिज्म का कि लाइक TTP है, BLA है, ये थ्रेट्स हैं, कंसर्न थ्रेट्स हैं जो मुसलसल हमारे पास चल रहे हैं। दूसरा है एथनिक एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, ख़ासतौर पे ब्लास्फेमी के वाक़यात जो हो रहे हैं वो कितनी शिद्दत पसंदी के साथ हो रहे हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मसलन बलूच का एक अलग इशू है, सिंधियों का भी कैनाल का इशू रिसेंटली आ गया है सामने, सराइकियों का प्रोविंशियल अटानमी का प्रोविंशियल डिमांड की मसला है, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अलग मसाइल हैं। पश्तून प्रोविंस के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिफ्ट चल रही है, ख़ासतौर पर PTM के बाद आपने देखा कि वहाँ पर भी एक इशू चल रहा है। अच्छा, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी इस तरह है कि जिस तरह आप देखें कि पॉलिटिकली भी मुल्क के लोगों को मौजूदा सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का बिलीव नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से देखें कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है, जॉब है नहीं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को चैलेंजेस है। मतलब नंबर 1 अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान का एक टेंशन है। मुसलसल डे 1 जब पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर एक हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान एक चैलेंजेस हैं और एक सिक्योरिटी के मामला चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न है। जो ग्रेट पावर्स हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स में, चाइना, रशिया, USA, ये 3 बड़े ऐसे पावर्स हैं जिनमें हम फंस गए बीच में। अब हमारी मजबूरी है कि हम इतने इकोनॉमिकल जो स्टेबल नहीं हैं, हम तो डिपेंड करते हैं। Sir, how has CPEC transformed Pakistan's economic and strategic relationships with China, and what challenges will Pakistan face in ensuring? इस क्वेश्चन में 2 एस्पेक्ट है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है एंड सेकंड एस्पेक्ट इज चैलेंजेस। CPEC से पाकिस्तान का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। या आपके अभी रोड के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान जाएँ तो मोटरवेज के लिंक बन गए, ईस्टर्न अलाइनमेंट बन गई है, वेस्टर्न अलाइनमेंट बन गई है। तो एक तो बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फिर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे। एक तरह से पाकिस्तान की मैशियत को बूस्ट मिलेगा, जो ट्रेड है उस ट्रेड कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान का बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्म में देखें कि पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल एक अलायंस हो जाएगा चाइना के साथ। तो पाकिस्तान ये CPEC ले लेगा तो एक इकोनॉमिक डेट बढ़ जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर कर्जे का बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके पीछे चाइनीज़ इंटरेस्ट भी है। चाइना उसमें पैसा लगा रहा है, वो पाकिस्तान को वो पैसा फिर वापस करना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ईस्टर्न अलाइनमेंट बन रही है, वेस्टर्न अलाइनमेंट बना रहे हैं, उसमें एनर्जी सेक्टर भी है जिसकी मैं मिसाल दूंगा थर्पोल। इस तरह बहुत सारे एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो CPEC की वजह से हमें फ़ायदा होगा। दूसरा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। अब देखें, इसकी एक मिसाल आप ले लें, सखर और हैदराबाद मोटरवे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बुनियादी कंपोनेंट्स क्या अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए। उसके अलावा US से इस प्रोजेक्ट की वजह से USA भी हमसे खुश नहीं है। USA भी चाहता है कि ये प्रोजेक्ट किसी तरीके से ख़त्म हो जाए या रुक जाए। अच्छा, दूसरा बैलेंसिंग फॉरेन इंटरेस्ट। अब हम दो सुपर पावर्स को कंसीडर कर लें, USA है, चाइना। अब दोनों सुपर पावर्स के साथ हमने बैलेंसिंग अप्रोच अडॉप्ट करनी है। बैलेंसिंग अप्रोच अडॉप्ट करके ही हम आगे जा सकते हैं और इसको का प्रोजेक्ट को करें, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, बैलेंसिंग के साथ हम चल सकते हैं। Sir, what do you think Pakistan's participation in SCO contribute to its regional security and economic objectives? असल में जो SCO का जो एजेंडा है ना, वो बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत सारी फील्ड्स में कोऑपरेशन को इन्हांस करना है। कौन सी कोऑपरेशन? मतलब फील्ड्स हैं जिसमें इकोनॉमी है, ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, सोशियोलॉजी है, कल्चर है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और काउंटर टेररिज्म की पॉलिसीज है। मतलब उसमें आप देखें कि चाइना भी है और रशिया भी है और उसके अलावा बहुत सारी 10 के करीब उसके ममालिक मेंबर हैं। Sir, what are the major key pillars of Pakistan's future foreign policy? How can it balance its relationships with powerful states like China, Russia, and United States? उसमें नंबर 1 है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में ये है कि पाकिस्तान को यहाँ पर अपनी ट्रेड और जो है वो इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। दूसरा रीजनल
کنیکٹیوٹیز ہم ہوں گے SCO کے ذریعے یا CPEC کے ذریعے. ایسے بعض آرگنائزیشن ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی ساؤتھ ایشیا کے ذریعے ایک لنک پیدا کر سکتے ہیں, یا ہماری رسائی جو ہے مڈل ایسٹ تک چلی جائے گی ان پروجیکٹس کی وجہ سے. ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پاکستان نے کس کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کی ہے. ایک بہت بڑا دہشت گرد پاکستان نے پکڑا ہے جس کا نام ہے شریف اللہ, افغانستان سے ہم نے پکڑا, USA کے حوالے کیا. ایک تو انٹرنیشنل جو سیکورٹی ہے اس میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں پاکستان نے اپنا رول بھی پلے کیا USA کے ساتھ, اسپیشلی فوکسنگ USA کے حساب سے. وار اگینسٹ ٹیررزم میں آپ دیکھیں 2001 9/11 کے بعد سے لے کر کنٹینیوسلی یہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نیوکلیئر جو ہے وہ ڈیٹرنس کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سب سے بڑی طاقت نیوکلیئر پاور ہے. اور ہمیشہ جو سپر پاورز ہیں جس طرح USA ہے, رشیا ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے, ان کو سب سے بڑا کنسرن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ یا ریلیجیس قوتیں حاوی ہو گئی اور یہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹس ہے اور یہاں ایک اٹم جو ہے نیوکلیئر پاورز ہیں اور یہ ہتھیار پھر مس یوز ہوں گے. اچھا, دوسرا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ گلوبل پوزیشننگ کے حوالے سے پاکستان کو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان نے ان تینوں سپر پاور سے بیلنسنگ اپروچ رکھنی ہے. پاکستان نے USA کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ, اور ہر کسی کے ساتھ ایک بیلنسنگ اپروچ کے ساتھ اس نے آگے چلنا ہے. Sir, how does Kashmir conflict continues to shape Pakistan's relation with India, and what steps can be taken to reduce this tension between two nuclear countries? کشمیر جو کنفلکٹ ہے ڈے 1 سے پاکستان اور بون آف کنٹینشن ہے دونوں کنٹریز کے درمیان ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پہلے دن سے ہی, تو ہمیشہ ہمارا جو کوشش ہے پولیٹیکل اس کو جو ٹینشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان, انڈیا اور پاکستان کے درمیان, ہمیشہ رہی ہے, ماضی میں رہی ہے, 2-3 جنگیں بھی ہوئی ہیں, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, ہماری تعلقات خراب رہے. اور ریسنٹلی کب خراب ہوئے تعلقات؟ جب انڈیا نے کشمیر میں آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ کیا کر دیا, ختم کر دیا. اور یہ کب ہوا؟ 5 اگست 2019 کو ہوا. اور اس کا جواب میں ہم نے کھوکھڑا پار مونا باؤ بند کر دیا, ہم نے ایئر سروسز بند کر دی, اس طرح ہم نے سب چیزیں بلاک کر دی اور تعلقات سارے ختم کر دیے ہندوستان کے ساتھ. تو ہمیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بائیلیٹرل ڈائلاگ سے ریزالو کرنا چاہیے, اس کا پولیٹیکل کوئی سولوشن نکالنا چاہیے. اگر ہم آپس میں اپنے مسائل حل کر لیں تو جس طرح یورپی یونین بن گئی ہے اس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے. What do you think development in Afghanistan affects Pakistan's security and economic interests? پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی اور ٹیررزم کا مسئلہ ہے. افغانستان کی سرزمین میں لوگ بیٹھے, ان کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پر ہیں, TTP وہاں پر ہے, بہت سے لوگ ان کے وہاں پر ہیں. سفر ایکسپریس میں جو ان کے ہینڈلرز تھے وہ افغانستان میں تھے. تو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر افغانستان میں پیس ہوگا, ڈیولپمنٹ ہوگی, خوشحالی ہوگی, وہاں بھی لوگ پڑھیں گے, ایجوکیشن میں جائیں گے, بچیاں اسکولوں میں جائیں گے, ریلیجیس ایکسٹریمزم ختم ہوگا, ڈیولپمنٹ ہوگی, انفراسٹرکچر ہوگا. ایک تو وہ, ایک دوسرا پھر ہمارے پہ اوپر برڈن ہے, ان کا مہاجرین کا ریفیوجیز برڈن ہے. افغانستان کے اندر حالات خراب ہیں تو اس کا اثر پاکستان اور اسلام آباد تک اس کا اثر نظر آتا ہے. Mr. Iltaf Hussain, a history professor, was interviewed to gain informed and analytical insights into Pakistan's foreign policy. His academic background and expertise in historical and geopolitical affairs made him an ideal choice to discuss Pakistan's bilateral relations with countries like China, the US, and India, its role in global organizations such as UN, OIC, and SCO, and pressing security, economic, and regional challenges. His perspective provided a deeper understanding of how historical context shapes current foreign policy directions and Pakistan's position in regional and international affairs. Thank you. Pakistan's foreign policy challenges. Pakistan's foreign policy faces complex challenges stemming from its geopolitical context, regional dynamics, and internal vulnerabilities. Pakistan-China relations. Now, the key question here is how has CPEC transformed Pakistan's economic and strategic relation with China, and what challenges it faces in its ensuring. To summarize this, CPEC has significantly strengthened Pakistan's economic and strategic partnership with China through infrastructure, energy, and trade investment. However, challenges such as debt concerns, security threats, and geopolitical oppositions pose hurdle to its full realization. Managing these issues will be crucial for ensuring a long-term benefit. Pakistan-US relations. So the question is, what are the key pillars of Pakistan's future foreign policy, and how can Pakistan balance its relationship with major powers like China, Russia, and United States of America? To summarize this, Pakistan's future foreign policy focuses on economic growth, security, and politic engagement, while balancing relationship with China, economic and defense, with US trade and security, and Russia, energy and strategic cooperation. Maintaining neutrality and avoiding bloc politics will be the key for achieving a long-term stability and prosperity. Pakistan-India relationships. How does Kashmir conflict shapes Pakistan's relation with India, and what steps can be taken to reduce the tension between the two nuclear-armed countries? To summarize this,
Kashmir conflict remain a constant tension in Pakistan-India relations, leading to political, military, and economic consequences. There are steps to reduce hostilities that include diplomatic dialogues, military de-escalation, economic cooperation, and confidence-building measures. A long-term peaceful resolution requires sustained engagement, trust building, and regional sustainability efforts. Security and economic challenges. Now, the question here is, what are the major security challenges Pakistan faces, and how do they affect its foreign policy priorities? Or how does the development in Afghanistan affect Pakistan's security and economic interest? To summarize this, Pakistan's security challenges, both internal and external, heavily shape its foreign policy. The country prioritizes strong alliance, counter-terrorism corporations, economic diplomacy, and regional stability efforts. Interview versus literature or news analysis. First of all, Pakistan-China interview said ties are strong via CPAC. News confirms with Chinese submarine delivery showing deep military ties. It is from EB News. Second, Pakistan-US interview noted uncertainty due to China links. News shows US may get tougher under Trump towards Pakistan-China alignment. Number third, Pakistan-India interview highlighted Kashmir tension. News backs this with terror accusations after a train attack. Number four, security or economic. Interview in fact security threats. News shows Balochistan violence rising. Economy improving with FDI growth but still unstable. Number five, Afghanistan Middle East interview mentioned refugees border issues and news confirmed